हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इंस्टॉलेशन गाइड को डिस्कस करेंगे। टुडे वीडियो इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सोलर सिस्टम। इट्स वन ऑफ द यूनिक वीडियो where we will discuss series and parallel connection, and mostly you will see 90% of installer do mistake. Because of this you can see the fire of solar system will happen. इस वीडियो में सबसे पहले हम सोलर प्लेट्स और उनके कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि सोलर प्लेट में दो टाइप के कनेक्शन है, एक फीमेल कनेक्शन है और दूसरा मेल कनेक्शन है। यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्म करना है कि मेल कनेक्शन पॉजिटिव कनेक्शन होता है और फीमेल नेगेटिव कनेक्शन यहाँ पे होता है। मोस्ट ऑफ द सोलर प्लेट में ये दोनों वायर ब्लैक होती हैं और ये हम कनेक्शन बॉक्स को खोलने के बाद भी मालूम कर सकते हैं। Here we will discuss the connection of the solar plate, and we have to see there are two type of connection. One of them is called male connector and the other one is female connector. So male connector are basically the positive one and the female connector is negative one. So most of the solar panel have both the black wire, but you can see the male connector which one is positive, and we can also see when we open the DB box of solar plate. सोलर पैनल में बेसिकली MC4 टाइप के कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं। जब सोलर प्लेट को हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस केस में हम MC4 कनेक्टर यूज़ करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि इंस्टॉलर वायर को कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। उसका नुकसान ये होता है कि उसमें ड्यूरिंग कनेक्शन आपके एम्पेयर ड्रॉप आना शुरू हो जाते हैं। तो रिकमेंडेड मेथड यही है कि आप MC4 कनेक्टर यूज़ करें। So one of the recommended method during installation is to use the MC4 connector. Most of the solar installer, you can see they are just connecting the wire manually, and due to this most of the ampere and voltage drop because of the manual installation. अब यहाँ पे हम सोलर पैनल की डाटा शीट को डिस्कस करेंगे। ये एक 310 वाट के सोलर पैनल की डाटा शीट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है 8.38 एम्पियर का करंट है इस सोलर प्लेट का, और पी मैक्सिमम वोल्टेज जो है 37 वोल्ट का है। हमारे लिए यहाँ पे क्लोज सर्किट करंट ही इम्पोर्टेंस रखता है। ओपन सर्किट करंट सिर्फ उस सूरत में कंसीडर किया जाता है जब सोलर प्लेट कनेक्ट नहीं हुई होती। So here we will discuss the data sheet of solar plate. We can see the maximum current of this solar plate is 8.38 ampere, and it's a closed circuit current, and the closed circuit voltage is 37 volt. So open circuit voltage we will consider only when it's not connected in the circuit. सो इस डायग्राम से हम क्लियर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पैरेलल कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। पैरेलल कनेक्शन में पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि पॉजिटिव कनेक्शन एक सोलर प्लेट का दूसरी सोलर प्लेट के पॉजिटिव कनेक्शन से ऐड किया जाएगा। ऑल द पॉजिटिव वायर को MC4 कनेक्टर के जरिए हम इकट्ठा कनेक्ट करेंगे, और ऑल नेगेटिव वायर को MC4 कनेक्टर के जरिए हम इकट्ठा कनेक्ट करेंगे और इसको हम चार्ज कंट्रोलर के साथ मिला देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर करंट आपस में ऐड हो जाते हैं और वोल्टेज जो है सिमिलर रहती है। Here we will see in parallel connection all the positive wire of the solar panel are connected together with the help of MC4 connector, and then they are connected with the solar controller, charge controller, and we will see all the negative wire of solar panel are connected with MC4 connector, and they are also connected with charge controller. Here we can see the current in parallel connection are added up while the voltage remain the same.
सो दिस ये डायग्राम हमें पैरेलल कनेक्शन को शो करती है, जिसे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव वायर आर कनेक्टेड टुगेदर और नेगेटिव वायर सारी सेपरेट कनेक्ट की जाती हैं। 90% इंजीनियर और इंस्टॉलर जो मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आपने मोस्टली देखा होगा कि सोलर पैनल में आग लग जाती है, उसमें यह है कि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर हमारा सेकंड सोलर पैनल ख़राब हो जाता है या उसमें फॉल्टी डिक्लेयर हो जाता है, तो करंट इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू दी चार्ज कंट्रोलर वो एक क्लोज लूप में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उस सोलर पैनल में मूव करना शुरू कर देता है। एंड फ्रॉम डाटा शीट हमने पहले ही देखा है कि एक सोलर पैनल जो हमने कंसीडर किया है वो 8 एम्पेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब मुख्तलिफ सोलर पैनल जब पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो एक सोलर पैनल से जब 20-25 एम्पेयर गुजरेगा तो उस सोलर पैनल को आग लग जाएगी, क्योंकि इस सोलर पैनल में कहीं पे भी दरमियान में हमने कोई फ्यूज ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट इस सोलर पैनल से गुजरेगा, जिसकी वजह से मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा कि सोलर पैनल को आग लगती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को भी नुकसान होता है। So our first priority is safety. So 90% of engineer and installer do one error because they are not installing any fuse between the different solar plates. So what's happened when there is one solar plate is faulty, the maximum current will make a closed loop and start passing through that faulty solar plate. And then what's happened, because the solar plate is designed for specific current, and when maximum current will pass through this solar plate, it get fired. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर प्लेट को किस तरह आग लग सकती है और ये बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा सकती है। So solution of the problem, as I already told you, कि हम एक हर सोलर प्लेट और दूसरी सोलर प्लेट के दरमियान में एक फ्यूज यूज करेंगे। जैसे हमारे केस में करंट हर सोलर प्लेट का ऑलमोस्ट 8 एम्पेयर है, तो हम 10 एम्पेयर का एक सोलर फ्यूज यूज करेंगे, जिसकी वजह से अगर दरमियान की सोलर प्लेट फॉल्टी होती है तो जो 10 एम्पेयर से करंट इंक्रीज करेगा तो वो फ्यूज ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग और सोलर सिस्टम दोनों महफूज रहेंगी। Here you can see I already told you we will add fuse between the solar plate, and what will happen, because you can see it has the value of 10 ampere when the middle solar plate is maybe a faulty, and the current will try to pass, maximum current is trying to pass the middle solar plate due to decrease in the resistance. Then what will happen, it will trip and don't allow the current to pass this particular faulty solar plate, and it not only save the building but also save the solar system. So we will discuss here, when we connected all the solar plate in a series connection, we can see the same current is passing through all the solar plate while the voltage is added up. We can see here the current will remain the same while voltage is added up, and we will use only one fuse at the end for the protection. अब सीरीज कनेक्शन में जब कोई सोलर पैनल फॉल्टी हो जाएगा, उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि करंट पास कर रहे फ्रॉम फर्स्ट सोलर प्लेट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। सो अगर सोलर प्लेट के दरमियान में फॉल्टी हो जाएगी तो इस केस में आपकी मिडल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, करंट सिमिलरली उसमें से पास कर जाएगा। हियर वी कैन सी current 8 ampere इस केस में रहेगा while voltage is drop, so it will affect your charge controller because it's unable to charge your battery system. तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी लेकिन करंट सेम रहेगा। Here we can see in case of any faulty solar plate, we can see the current will stay the same while the voltage will drop. So when the voltage is drop, it will affect the charge controller, and charge controller is then unable to charge your the battery and the system. इस वीडियो में हम क्लियर देख सकते हैं कि सीरीज में किस तरह से कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव कनेक्शन एक सोलर प्लेट का दूसरी सोलर प्लेट की पॉजिटिव कनेक्टर से मिलेगा। देन सिमिलरली अगेन द नेगेटिव connected again the positive, and the other wire is directly connected to the charge controller.
So I think it's very easy to understand from this diagram how to connect the solar panel in series. If you have any kind of question, you can ask me in the comment. किसी किस्म का इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं. So please like and subscribe the channel and click the bell icon for more videos. So in case of any question, आपके ज़हन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So you can support me by subscribing my channel and you will see lot of informative video in the future too. Thank you very much.